Good afternoon to all. I hope I am audible to you. Good afternoon to all. I hope I am audible to you. Good afternoon to all. I hope I am audible to you. Sorry, good morning to all. I hope I am audible to you. It's a morning. So, good morning to all. I hope I am audible to you. Good morning to all. I hope I am audible to you. Good morning to all. I hope I am audible to you. I hope I am audible to you. Everybody, please join the lecture. So today we are going to see the remaining part second of your myocardial, your angina pectoris. So I would like to revise what we have seen in the last lecture so that you will get some idea. Yesterday there was some electric issue. So yesterday we was not able to conduct the lecture. So in the last lecture what we have seen will I would like to revise you. So we was started with the anti-anginal drugs used in the angina pectoris. So from that part we have seen what do you mean by angina, physiology of angina pectoris, physiology of your blood vessel, and physiology of tone of the blood vessel we have seen. We have also seen the nitric oxide, different types of nitric oxide synthesis. We have seen type 1, type 2, type 3 in the last lecture we have seen. So remember, nitric oxide is an endothelial derived relaxing factor. Also it is a biosynthesized from arginine amino acid, which is a very important question, already aa chuka hai. We have seen what do you mean by preload, what do you mean by afterload, right? We have also seen what are the different classes of drugs that are used in the angina pectoris, what is the mechanism of them. We have seen that this, okay. After that we have seen the functions of nitric oxide, what do you mean by anginal index, right? After that we have seen the how there is a affect, what is the how there is a change in the diameter of blood vessel, of if blood vessel is normal, if in classical angina what happens, the variant angina what happens, we have already seen, right? We have also seen types of angina. Classical angina is there, also known as a stable or exertional angina. Then second is a variant angina, also known as a vasospastic angina. Third one is a unstable angina pectoris, right? So actually angina is nothing but it is not a disease, actually it is a symptoms of myocardial ischemia, okay. It is a symptom of myocardial ischemia that occurs through because of the imbalance between ऑक्सीजन डिमांड एंड सप्लाई, है ना. अगर डिमांड एंड सप्लाई का इनबैलेंस हो गया तो अंजाइना पेक्टोरिस होता है, राइट. We have seen this part, classification of drugs used in the angina: nitrates, then calcium channel blockers, beta blockers, potassium channel openers, partial fatty acid oxidase inhibitor, and sodium channel blockers. We have seen this. We have also seen the classification 2 times, right? All right. Next, we have also seen the classification from KD Tripathi. So different classifications we used to see frequently because classifications are important. नाइट्रेट्स में शॉर्ट एक्टिंग में आता है ग्लिसरील, ट्राइनाइट्रेट, आइसोसोर्बाइड, डाइनाइट्रेट, सब लिखेंगे, है ना. बाकी अपने ऑलरेडी देखा है क्लासिफिकेशन, राइट. रिमेंबर वी हैव सीन दिस क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, उसके ऊपर लॉन्ग एक्टिंग में एक क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, है ना. आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट इज लॉन्ग एक्टिंग, ये क्वेश्चन आ चुका है. शॉर्ट एक्टिंग में नाइट्रोग्लिसरीन है ना. डाइहाइड्रोपिरिमिडिन्स में क्या क्या आता है क्वेश्चन अपन ने देखा है ऑलरेडी. पोटेशियम चैनल ओपनर के ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है ना. डिकोरेंडिल, पिनेसिडिल एंड
minoxidil. ठीक है, how drugs will act, है ना, drugs used in angina we have already seen. Some drugs will reduce after load, some drug will reduce a preload, right? Some has a negative inotropic effect, some are the vasodilators, right? We have seen the pharmacology of organic nitrates, their mechanism of action and their adverse effect, their indications we have seen. ये भी part हो चुका है, right? We have seen this up to this. Therapeutic uses of nitrates we have already seen, right? So next part is nothing but the beta blockers. So beta blockers or beta adrenergic blockers, they are also used in the angina pectoris. So they are used in the all stages of ischemic heart disease. Ischemic heart disease मतलब क्या, जहाँ पे ब्लड कम जा रहा है because of the decreased blood supply, there is a decreased oxygen, and because of the decreased oxygen cell will die, known as ischemia. So decreased blood and oxygen known as ischemia. So they are used in the all stages of ischemic heart disease except prismental or also known as vasospastic angina or variant angina. So beta blockers are not used in the vasospastic or prismental angina. तो प्रिजमेंटल अंजना और वेरिएंट अंजना जो है, प्रिजमेंटल अंजना और वेरिएंट अंजना और वैसोपास्टिक अंजना, उसमें बीटा ब्लॉकर्स यूज नहीं करते, रेस्ट ऑफ द अंजना में यूज करते. और बीटा ब्लॉकर्स एक्शंस आर प्रोड्यूस्ड बाय, है ना, बीटा ब्लॉकर व्हाट दे डू, बीटा ब्लॉकर ब्लॉक्स, है ना, बीटा ब्लॉकर क्या करते हैं, बीटा ब्लॉकर्स दे विल ब्लॉक द एक्शंस प्रोड्यूस्ड बाय सिंपैथेटिक एक्टिविटी. जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जैसे है ना, noradrenaline by acting on a beta 1 receptor will increase the heart rate, force of contraction. By acting on a alpha 1 receptor in the blood vessel, increase the peripheral resistance, that is a preload. So beta blockers, their actions are produced by because of the blocking of sympathetic activity. Now in angina what happens, angina pectoris में क्या होता है, in angina, in the classical angina, so exercise and emotional excitement. एक्सरसाइज किया आपने तो ऑब्वियसली हार्ट रेट बढ़ेगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा एंड कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा. दैट मीन्स वर्कलोड ऑन हार्ट इज इंक्रीज्ड ड्यू टू एक्सरसाइज. इमोशनल एक्साइटमेंट, जैसे बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए आप, है ना, बहुत दिनों के बाद पीछा कर रहा था सर आज, हाँ बोली, इमोशनल एक्साइटमेंट, है ना, अटैक आ गया मर गया, इमोशनल एक्साइटमेंट. तो इमोशनल एक्साइटमेंट और एक्सरसाइज कैन इंड्यूस angina which can result because of the increased heart rate. Now emotional excitement results in the increase in heart rate, blood pressure, myocardial contractility. अगर हार्ट का काम बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, हार्ट रेट बढ़ गया, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ गया, तो ऑब्वियसली क्या होगा, मेटाबॉलिज्म इन द मायोकार्डियम, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म इन द मायोकार्डियम विल आल्सो इंक्रीज. All these are the sympathetic activity. They are because of the sympathetic stimulation, because of the noradrenaline, right? So all these actions they are blocked by beta blockers in case of angina pectoris. Now beta blockers they increases the exercise tolerance without increasing the anginal index and prevent the subject, you know, prevent both manifestation which are subject to ECG and cardiac ischemia. जो भी symptoms आएंगे ECG में या फिर because of the cardiac ischemia, तो ये symptoms prevent करते हैं. They will, है ना, they will increase the exercise tolerance like nitrate without increasing the anginal index, and they prevent both manifestations subject to ECG changes and cardiac ischemia. Cardiac ischemia ECG के जो manifestation changes आते हैं वो prevent करते हैं. They are useful in the they are not used in the prismatic or vasospastic or variant angina. वेरिएंट अंजना में या फिर प्रिजमेंटल अंजना में ये इनको यूज नहीं करना है. लॉन्ग टर्म यूज ऑफ बीटा ब्लॉकर आफ्टर मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन. ये मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन क्या होता है अपन देखेंगे आज. तो बीटा ब्लॉकर्स ऑन लॉन्ग टर्म यूज आफ्टर मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, दे रिड्यूसेस द रेट ऑफ री इन्फ्रेक्शन. अगर मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन हो गया है तो री इन्फ्रेक्शन नहीं होने देगा बीटा ब्लॉकर. So they reduces the rate of reinfection and sudden death after myocardial infarction. They have usefulness. Now, adverse reactions of beta blocker. So adverse reactions
Adverse reactions of beta blocker. So adverse reaction to the anti-anginal therapy. Beta blockers, when they are used in the angina, they can precipitate or increase or aggravate the symptoms of congestive heart failure. Beta blockers, if you use along with the digoxin, so you have to be careful. You have to watch the development of heart block. That's why beta blocker are contraindicated with the digoxin. Digoxin के साथ में beta blockers यूज करेंगे तो हार्ट ब्लॉक भी हो सकता है. डेवलपमेंट ऑफ सीवियर सिंकोप यूजिंग नाइट्रोग्लिसरीन, है ना, और नाइट्रेट इन द पेशेंट वन बीटा ब्लॉकर. बीटा ब्लॉकर के साथ में नाइट्रेट्स भी यूज नहीं करना है, तो इट कैन रिजल्ट इन द सीवियर सिंकोप. दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन केस ऑफ वेरिएंट एंजाइना. यहाँ पे these are the pharmacology and the pharmacology of beta blockers in case of angina pectoris. Beta blockers in case of angina pectoris. Remember, they are not used in the prismatic or vasospastic or variant angina. So the effect is because of the blockage of beta receptor, beta adrenergic receptor, alpha receptor, beta adrenergic receptor, right? So adverse reactions they are not used along with the digoxin and nitrates because they can precipitate the congestive cardiac failure or हार्ट ब्लॉक, राइट. याद रखना है. नेक्स्ट क्लास होता है आपका यहाँ पे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स. तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स इन द antihypertensive also. Calcium channel blockers, what they will do? Calcium channel blockers, they will block the L type of calcium ion channel. L type of calcium ion channel. They will block a L type of calcium ion channel in the heart and blood vessel. In the heart and blood vessels. तो ब्लड वेसल में भी ब्लॉक करेंगे, आपके हार्ट में भी ब्लॉक करेंगे. L type of calcium channel. They will prevent the release of calcium inside the cell so that depolarization or excitement should not be there, right? So mechanism of action क्या है इनका? So mechanism of action, you can see what. Calcium channel blocker mainly act by inhibiting the entry of calcium from the L type of calcium channel into myocardial and vascular smooth muscle. They decreases the availability of intracellular calcium, and all these drugs they bind to alpha 1 unit of L type of calcium channel. ना उसमें भी 2 यूनिट होता है, अल्फा एंड बीटा. कैल्शियम चैनल में भी 2 सब यूनिट होता है, अल्फा एंड बीटा. कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे विल ब्लॉक calcium channel by binding with the alpha subunit of L type of calcium channel. So they block the calcium channel in the heart and blood vessels. Now their beneficial effect in the angina pectoris. Calcium channel blocker का use effect क्या है? देखो, they has a negative inotropic effect. Force of contraction कम कर देगा. Negative inotropic effect, right? So because of that, verapamil and diltiazem, as they have negative inotropic effect, they will decrease the force of contraction and heart rate. Force of contraction. Okay? So they are the negative inotropic and they should not be combined with the beta blocker. Calcium channel blocker and beta blockers, they should not be used together. Calcium channel blocker, beta blocker दोनों साथ में नहीं देना है. In treatment of angina with effort, that is a classical angina. Beta blocker, calcium channel blockers also has an anti-arrhythmic effect. We have already seen calcium channel blockers. They are the class 3. ना क्लास 3 anti-arrhythmic drug होता है. क्लास 1 क्या होता है? सोडियम चैनल ब्लॉकर. क्लास 2 क्या होता है? बीटा ब्लॉकर. क्लास 3 क्या होता है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर. क्लास 4 क्या होता है? पोटेशियम चैनल ब्लॉकर. क्लास 5 क्या होता है ना? एडेनोसिन एंड डिगोसिन. दे आर 5 classes of anti-arrhythmic. We have seen it. So anti-arrhythmic effect means class 3. So these drugs they will decrease the discharge from SA node, है ना. SA node का frequency कम करेगा and suppresses the ectopic pacemaker activity. They will suppress the ectopic pacemaker activity. That's why they are anti-arrhythmic. Now next effect on a coronary artery. Calcium channel blocker का effect क्या है arteries में?
Obviously they are the vasodilator, so potent coronary vasodilator and can prevent a spasm of artery. जो artery का constriction हो रहा है, contraction हो रहा है because of the stress or emotional stimuli, तो वो prevent करे. Can be used in the prismatic and variant angina. देखो बीटा ब्लॉकर्स कैन बी यूज्ड इन द प्रिजमेंटल एंड वेरिएंट एंजाइना, बट सॉरी, बीटा ब्लॉकर कैन नॉट बी यूज्ड इन द प्रिजमेंटल एंड वेरिएंट एंजाइना, बट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कैन बी यूज्ड. बीटा ब्लॉकर यूज नहीं कर सकते लेकिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज कर सकते हैं. नाउ इफेक्ट ऑन अ पेरिफेरल ब्लड वेसल्स, तो उसके ऊपर भी क्या इफेक्ट रहेगा. सो ऑब्वियसली दे आर वैसोडाइलेटर, सो डिक्रीजेस द वेस्कुलर रेजिस्टेंस एंड ब्लड प्रेशर in both arteries and vein, both territories. इसमें है ना, verapamil is nothing but the phenylalkylamine derivative, diltiazem is a benzodiazepine derivative, है ना. बाद में निपेडिपिन जो है, निपेडिपिन, amlodipine, ticardipine, nicardipine, है ना, all they are the dihydropyrimidines. We have already seen the class. Nifedipine is a potent vasodilator than verapamil. Anti-anginal effect is due to the two reasons. Calcium channel blocker exerts anti-anginal effect. Anti-anginal effect इसका दो कारण से होता है. There are two reasons. First, they improve the coronary blood flow. Second, they decreases the oxygen demand of heart due to negative inotropy, due to reduction in the systemic vascular resistance and blood pressure. So there are the two actions because of the decrease in the peripheral resistance. Free load is decreased and also due to negative inotropy effect, after load is decreased. So calcium channel blockers. Next is the verapamil. Verapamil, it can cause suppression of SA and AV node both, which are calcium dependent, है ना. SA node, AV node का जो impulse generation, impulse conduction होता है वो कैल्शियम डिपेंडेंट होता है, मतलब कैल्शियम आयन ट्रिगर करता है. कैल्शियम शुड गो इनसाइड सेल, देन ओनली SA node AV node will start. That's why verapamil causes the suppression of AV node SA node due to calcium dependency, and they also causes the coronary and peripheral blood vessel dilation, vasodilation. Verapamil will block the atrioventricular node, so it is a potent antiarrhythmic effect is also there, and it is a potent negative inotropic drug. एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है वेरापामिल के, इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है. तो कॉन्स्टिपेशन, वर्टिगो मतलब चक्कर आना, ब्रैडिकार्डिया, हार्ट ब्लॉक, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, हाइपोटेंशन एंड एंकल इडिमा. These are the adverse effect. Now next drug is a diltiazem. Diltiazem is a benzodiazepine derivative, calcium channel blocker. तो देखो इसका क्या है कि इट हैज अ लेस नेगेटिव आइनोट्रोपिक देन वेरापामिल. वेरापामिल क्या है, पोटेंट आइनोट्रोपिक है, नेगेटिव आइनोट्रोपिक. नेगेटिव आइनोट्रोपिक मतलब क्या, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम करता है. तो ड्रग विच डिक्रीजेस द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोकार्डियम नोन एज अ नेगेटिव आइनोट्रोपिक. ड्रग विच इंक्रीजेस द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन नोन एज अ पॉजिटिव आइनोट्रोपिक. राइट, we have already seen this in the introduction part only. ठीक है. Now nifedipine, it is a negative inotropic than verapamil and nifedipine, less negative inotropic. Should be avoided in the patient with a congestive cardiac failure. Nifedipine क्या है, it is a more potent coronary and peripheral vasodilator. ये potent vasodilator and has a negligible inotropic effect. ना, also it is a potent platelet aggregation inhibitor. तो निफेडिपिन प्लेटलेट एग्रीगेशन भी नहीं होने देता, दैट इज वन एडिशनल बेनिफिट. ये वैसोडाइलेटर है, मतलब ब्लड वेसल को डायलेट करता है, एंड निग्लिजिबल नेगेटिव आइनोट्रोपिक, मतलब हार्ट को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा, ब्लड वेसल को डायलेट कर देगा. राइट, इट also relaxes the bronchial as well as uteric as well as uterine smooth muscles. तो ब्रोंकियल भी रिलैक्सेंट है ना, यूरेटर है उसको रिलैक्स करता है, यूट्राइन मसल को रिलैक्स करता है. एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है इसके, हेडेक, टैकीकार्डिया, हार्ट रेट बढ़ेगा, डिजीनेस, फटीग, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, लेग क्रैम्प्स, पैरों में आपकी क्रैम्प्स आएंगे, स्किन रैशेस एंड जिंजिवियल हाइपरप्लासिया.
आपकी गम में प्रॉब्लम होगा। जिंजिवल हाइपरप्लेसिया इज आल्सो एडवर्स इफेक्ट ऑफ फिनिटोइन। आपने देखा होगा फिनिटोइन नाम का ड्रग जो है इट आल्सो एज अ जिंजिवल हाइपरप्लेसिया एज एडवर्स इफेक्ट। तो फिनिटोइन का भी एडवर्स इफेक्ट होता है जिंजिवल हाइपरप्लेसिया। व्हाट आर द थेरापेटिक यूजेस ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर? तो थेरापेटिकली दे आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेरिएंट एंजाइना, है ना, वेरिएंट एंजाइना कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, प्रेजमेंटल एंजाइना, रिफ्रैक्टरी टू द नाइट्रेट, मतलब क्या कि वेरिएंट एंजाइना व्हिच इज रेजिस्टेंट टू द नाइट्रेट थेरेपी, है ना। तो थेरापेटिकली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आर यूज्ड इन द वेरिएंट एंजाइना which is resistant to the nitrate therapy, and also they are used in the treatment of hypertension, also they are used in the Raynaud syndrome, also they are used in the cardiac arrhythmia. जो डायहाइड्रोपिरिमिडिन्स है जैसे निम्लोडिपिन, अपना जैसे आपका नेपेडिपिन है, नाइकार्डिपिन है, इजराडिपिन है ना, दे आर द सिमिलर टू द नेपेडिपिन। इनको बोलते हैं अपन नाइकार्डिपिन, इजराडिपिन, नेपेडिपिन, फर्स्ट generation, and amlodipine, felodipine, they are known as second generation. There is one more drug, nimlodipine, which is which selectively dilates the cerebral artery. ये cerebroselective होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। nimlodipine is a cerebroselective. Contraindications of calcium channel blocker. So they are contraindicated, they are not used in case of aortic stenosis. aorta में अगर stenosis वगैरह है तो उसमें severe myocardial depression अगर है तो उसमें नहीं। हार्ट अटैक में भी ये कार्डियक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स contraindicated। क्लिनिकल हार्ट फेल्यूर, अनस्टेबल एंजाइना में एंड एग्जिस्टिंग हाइपोटेंशन अगर है तो इसमें भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर contraindicated, क्योंकि ऑलरेडी हाइपोटेंशन है तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और भी ज्यादा हाइपोटेंशन करेगा, ठीक है। दैट्स व्हाई। हेलो हो ऑटोली 8:30-9 वाजता गेली। ठीक है। सो दीज आर द कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का यूजेस, उसके यूज इन द uses in the angina pectoris. So what are the therapeutic uses we have seen? Contraindications we have seen. Next is nothing but the potassium channel activator. Potassium channel activator as it is question मुझे से आ चुका है। Remember nicorandil and pinasadil, देन मिनॉक्सिडिल, है ना, डील वाले जो है डील, तो दे आर द पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर। मिनॉक्सिडिल, पिनासाडिल, पोटेशियम, है ना, पिनासाडिल, देन आपका निकोरैंडिल, दे आर द पोटेशियम चैनल ओपनर, पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर और ओपनर, दे आर द पोटेशियम चैनल ओपनर। तो दे ओपन द पोटेशियम चैनल एंड विथ एडिशनली नाइट्रिक ऑक्साइड डोनेटिंग प्रॉपर्टी। नाइट्रिक ऑक्साइड भी रिलीज कर देता है। सो प्रेफरेंशियली एक्ट्स ऑन वेन्स, दे डिक्रीजेस द प्रीलोड, reduces the preload, and also at arteries also, but preferentially venous preload ज़्यादा ना, so they are venodilator, that's why they decrease the preload more. They are used as alternative drug therapy for nitrates. मतलब अगर nitrates यूज नहीं कर सकते तो you can use potassium channel activator, है ना। क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है, पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर, पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर। नाउ नेक्स्ट इज some antiplatelet drug that can be used in the angina pectoris to decrease the arteriosclerotic plaque. तो एस्पिरिन, है ना, एस्पिरिन इज यूज्ड। एस्पिरिन मतलब क्या होता है? एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। तो इट इज यूज्ड प्रोफाइलैक्टिकली, मतलब फॉर द प्रिवेंशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन पेशेंट विद क्रोनिक स्टेबल एंड अनस्टेबल एंजाइना। तो एंजाइना आफ्टर मायोकार्डियल इन्फेक्शन अगर है तो एस्पिरिन यूज करना है उसमें। Then again dipyridamole is also antiplatelet drug which is a weak coronary dilator also. ये dipyridamole क्या है? It is a platelet aggregation inhibitor plus vasodilator. Both are used in the dose of 75 to 150
मिलीग्राम, राइट। नेक्स्ट होता है साइटोप्रोटेक्टिव। साइटोप्रोटेक्टिव मतलब मायोकार्डियल सेल को मरने नहीं देगा, मायोकार्डियल सेल्स है ना मरने नहीं देंगे, राइट। साइटोप्रोटेक्टिव, साइटोप्रोटेक्टिव। एग्जाम्पल ऑफ ड्रग इज अ ट्राइमेटाजिन, और इसमें जीपैट 24 में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। Trimetazine. So what is trimetazine? Again, a drug used in the angina pectoris, and it is a cytoprotective. Cyto मतलब क्या? सेल। प्रोटेक्टिव मतलब क्या? उसको है ना लॉस नहीं होने का, मरने नहीं देगा। क्यों मरेगा सेल? बिकॉज ब्लड नहीं सप्लाई होगा उसको, तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली वो मर जाएगा। तो trimetazine is calcium channel blocker also with a cytoprotective effect, cytoprotective effect on a myocardial metabolism. Now कैसे? It is also a PHOX inhibitor. PHOX मतलब क्या है? Partial, P for partial, है ना, P for partial, F for fatty acid, OX for oxidase. Partial fatty acid oxidase inhibitor, partial fatty acid oxidation inhibitor, right? तो होता क्या है कि योर मायोकार्डियम, तो यो मायोकार्डियम है ना, मायोकार्डियम ऑफ योर हार्ट कैन न्यूट्रलाइज आइदर ग्लूकोज which is the instant source and good source, then also can utilize lipids, means fat, also can use fat which is a not a good source. Okay, so if myocardium utilizes the lipids or fat for energy, so it will oxidize the fat and it will produce energy, but at the same time during the oxidation of fatty acid and fat there is a release of free radicals, and they can damage the myocardium. So that's why partial fatty acid oxidase inhibitor is also useful, right? So it is a more useful, partial fatty acid oxidase inhibitor is a more useful as anti-anginal. So remember, so another drug from this category is a ranolazine. Ranolazine is also PHOX inhibitor plus सोडियम चैनल ब्लॉकर। रेनोलाजिन क्या है? ये पार्शियल फैटी एसिड ऑक्सीडेज इनहिबिटर भी है प्लस सोडियम चैनल ब्लॉकर भी है। तो रेनोलाजिन इज द अप्रूव्ड ड्रग, रेनोलाजिन इज अ फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर chronic angina, approved drug for chronic angina. It does not have any effect on heart rate, blood pressure, and it is also safe with the phosphodiesterase. जैसे नाइट्रेट्स जो है या फिर बाकी वैसोडाइलेटर्स जो है, calcium channel blockers, nitrates, they are contraindicated along with the phosphodiesterase inhibitor, जैसे sildenafil citrate, tadalafil, Viagra वगैरह जो टैबलेट्स थे तो उसके है ना। So if you take nitrates for angina and if you also taking that Viagra or sildenafil, so what will happen? Severe hypotension will be there and patient may die, you know. That's why. So ranolazine is a first line drug approved for chronic angina and safe with the phosphodiesterase inhibitor like sildenafil. But ये क्या करता है? It can cause QT prolongation, मतलब QNT वेव जो होता है ECG का उसका लेंथ बढ़ा देगा। Contraindicated in patient with the liver failure. It is contraindicated in case of patient with the liver and kidney failure. इसको liver का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, उसमें ये यूज नहीं करना है। It is not used to treat the acute anginal episode. नेक्स्ट ड्रग होता है इवाब्रेडिन, इवाब्रेडिन है ना। ये क्या करता है? ड्यूरिंग द रीपोलराइजेशन है ना, आफ्टर द डीपोलराइजेशन act as a hyperpolarization of during the hyperpolarization sodium channels are there known as a funny current sodium channel, funny current sodium channel. So evaporating block that and decrease the excitement, decrease the excitedness, disturb the most permanent adverse effect. तो evaporating का एक adverse effect है visual disturbances. तो visual disturbance is the most common adverse. बस इसको इतना याद रखना, evaporating is a funny T current sodium channel blocker. It block the funny T current of sodium. Next drug is a phosphodiol. Phosphodiol is a selective Rho
रो काइनेज इनहिबिटर, है ना, सिलेक्टिव रो ए और रो काइनेज इनहिबिटर, सिलेक्टिव रो ए और रो काइनेज, मतलब रो ए मतलब ये रो काइनेज होगा. नाउ दिस एंजाइम प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन, ये एंजाइम भी इंपॉर्टेंट रोल करता है मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन एंड कार्डियक रिमॉडलिंग. So it is used in angina along with the cerebral vasodilatation. ठीक है, तो these are the drug. तो इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, ट्राइमेटाजोलिन के ऊपर, रेनोलेजिन के ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है राइट. तो यू कैन सी ओवर हियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर डिफरेंट, है ना. तो फर्स्ट क्लासिकल एंजाइना, फर्स्ट डायग्राम क्लासिकल एंजाइना. क्लासिकल एंजाइना में क्या होता है, तो देयर इज अ डेफिनाइट अथेरियोमा और अर्थेरोस्क्लेरोटिक प्लेग. तो डिपोजिशन ऑफ, है ना, डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड अर्थेरियोमा दैट डिक्रीजेस द ब्लड फ्लो टू द करस्पॉन्डिंग एरिया. ये जो एरिया है बाकी, तो दिस इज योर मायोकार्डियल मसल. ये क्या है, मायोकार्डियल मसल है. एंड दिस इज अ coronary blood vessels, small coronary blood vessels. You can say collaterals. So due to deposition of cholesterol and other fatty acid, other fats or clot, है ना, तो that, है ना, तो पहले ही ब्लॉक हो चुका है यहाँ पे, तो you will get a less blood overall. आपको यहाँ पे ब्लड कम जाएगा, मायोकार्डियम will get a less blood. So what happens if myocardial will get a less blood, known as ischemia, right? Now this ischemia itself is a potent vasodilator. अगर ischemia हो गया तो वो खुद ही blood vessel को dilate करेगा. And that's why these collateral, these subendocardial arteries, subendocardial resistant vessel, they are dilated. They are already dilated. तो है ना, तो क्लासिकल एंजाइना में vasodilator का उतना ज़्यादा यूज ना होता. Right, so this tissue will suffer from ischemia or this tissue may die. Second होता है आपका, now what is the actions of nitrate, है ना. Now what is the action of nitrate? तो organic nitrate they will dilate the blood vessel, dilate कर देगा. तो nitrate they have dilated blood vessel. यहाँ पे क्या, blood flow बढ़ गया. तो as there is a dilation of blood vessel by nitrates, there is increase the blood flow. तो यहाँ पे भी blood flow increase होगा. So there is a flow of blood increased in the ischemic zone. Ischemic zone में blood flow increase होगा, तो anginal pain relieve होगा. But resistant blood vessel in non-ischemic zone maintains the tone. तो non-ischemic zone है, non-ischemic zone, यहाँ पे ischemia नहीं है, तो it will maintain the tone. मतलब यहाँ पे regularly जितना सप्लाई होना चाहिए उतना ही होगा. So selective action of nitrate on a conducting vessel along with the ischemic dilation of the resistant portion. So increase in the subendocardial region, relief of anginal pain. Now type C, C diagram किसका है? तो action of dipyridamol, action of dipyridamol on a resistant vessel that will increase the blood flow to the non-ischemic zone to the determinant ischemic zone. देखो, okay, so dipyridamol क्या है? Dipyridamol is a vaso, it is not a potent vasodilator. ये क्या है? Antiplatelet. So it will only prevent this clot, aggregation of further development of clot. So because of this dipyridamol when used, it will decrease, ना यहाँ से blood flow ज़्यादा आएगा नहीं यहाँ पे. There is a decreased blood flow in the ischemic zone and increase the blood flow in the non-ischemic zone. तो यहाँ पे नॉन इश्चेमिक है, यहाँ पे ब्लड फ्लो का ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे बढ़ रहा है, उसको बोलते हैं दिस फिनोमेनॉन इज नोन एज अ कोरोनरी स्टील. दिस फिनोमेनॉन इज नोन एज अ कोरोनरी स्टील. नेक्स्ट वन इज अ मायोकार्डियल इन्फेक्शन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मायोकार्डियल इन्फेक्शन. मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या है? तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन मतलब क्या? इन्फेक्ट मतलब क्या? तो ड्यू टू डिक्रीज द ब्लड फ्लो इफ पर्टिकुलर टिश्यू इज डाइंग, से मायोकार्डियम में ड्यू टू ब्लॉकेज इन द कोरोनरी आर्टरी, मायोकार्डियम विल नॉट गेट अ सफिशिएंट ब्लड,
तो मायोकार्डियल टिश्यू विल स्टार्ट डाइंग. तो जब मायोकार्डियम में सफिशिएंट ब्लड नहीं जाता है तो मायोकार्डियल जो सेल है वो क्या होते हैं, मर जाते है ना. तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है ना. और आप बोलते हो हार्ट अटैक है ना. हार्ट अटैक क्या है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन मतलब हार्ट अटैक. तो कंजेस्टिव सॉरी मायोकार्डियल इन्फेक्शन, तो दिस इज अ coronary heart disease. Coronary heart disease मतलब atherosclerosis, coronary disease is one of the most important cause for premature death in developed countries है ना. तो the plague और atheroma which is in a coronary artery में जो blockage है, तो breakdown of that atheroma plague in a coronary artery result in the occlusion or formation of thrombus leading to acute myocardial infarction. Now this process develops slowly. This process develops slowly 6 to 8 hours, and after this cell of myocardium will die in an infracted area. That is known as a myocardial infection. मतलब मान लीजिए ये आपका हार्ट है, दिस इज योर हार्ट. तो मान लीजिए ये मायोकार्डियल ब्लड वेसल है, this is a myocardial. So because of the blockage of myocardial blood vessel, so this area will not get blood and it will die, known as a infract. So myocardial infraction क्यों बोलते हैं, there is a due to the coronary artery disease or due to the coronary artery disease or atherosclerosis, because of that blood will not get enough, blood is not getting blood is not supplied to your myocardium, and myocardial muscle will die. That is known as a myocardial infection, right? Now treatment objective क्या होना चाहिए, what should be the treatment objective in case of myocardial infection? So in case of myocardial infection, so treatment objective should be, your aim should be decrease in the myocardial ischemia and consequent death of cell. मतलब आपको एक ऑप्शन है, आपको एक करना है कि मायोकार्डियल इस्चेमिया कम करना है. यू हैव टू डिक्रीज द मायोकार्डियल इस्चेमिया बाय इंप्रूविंग द ब्लड फ्लो इंप्रूव करो, आप मायोकार्डियल इस्चेमिया कम हो जाएगा. और यू कैन डिक्रीज द डेथ ऑफ सेल बाय प्रोटेक्टिंग द मायोकार्डियम. तो हाउ, तो फर्स्ट ड्यूरिंग द मायोकार्डियल इस्चेमिया यू विल सफर अ सीवियर पेन. जब आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक आएगा तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा, है ना, बहुत ज़्यादा पेन होगा. सो इन दैट केस एनाल्जेसिक्स आर यूज्ड. तो एनाल्जेसिक्स कौन से यूज करना है, मॉर्फिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ अकूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर, है ना, मायोकार्डियल, है ना, मायोकार्डियल इन्फेक्शन. तो मॉर्फिन 10 मिलीग्राम और पेथिडीन 50 मिलीग्राम इंट्रावेनसली टू डिक्रीज द पेन एंड एंजाइटी. For anxiety you can also use diazepam. So to decrease the severe pain, morphine or pethidine can be used. Right? Now immediately thrombolytics, we have already seen in the that chapter, thrombolytics. तो उसमें स्ट्रेप्टोकाइनेज 1.5 मिलियन यूनिट्स इंटरवेनसली फॉर 1 आवर. इमीडिएटली हार्ट अटैक आने के बाद में स्ट्रेप्टोकाइनेज देना है. स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या है, it is a tissue plasminogen activator. It will activate the tissue plasminogen and will break down the clot. We have already seen in the coagulant anticoagulant thrombolytic chapter, है ना. So streptokinase is isolated from streptomyces, and urokinase, for urine. We have already seen in that chapter, right? Streptokinase either you have to use or you can use alteplase, recombinant DNA technology made tissue plasminogen activator. Anistaplase, urokinase, tenecteplase. These are the drugs. They are known as thrombolytics. They should be start as earliest as possible. मतलब जितना जल्दी हो सके उतना. हार्ट अटैक आने के बाद में ये ड्रग चालू करना है. पहला डॉक्टर ये ड्रग इंजेक्ट मारेगा, है ना. जब हार्ट अटैक का पेशेंट आएगा स्टेबलाइज करके पहला ये ड्रग मारेगा, है ना, यूरोकाइनेस और स्ट्रेप्टोकाइनेस और रेटेप्लेज और नेक्टिवेज. तो यू हैव टू इंजेक्ट एज अर्ली एज पॉसिबल विदिन 6 to 12 hours.
and they can decrease the damage to the myocardium and reduces the mortality. मृत्यु मरने का दर, मरने का रेट कम करेंगे, रेट ऑफ मोर्टेलिटी, रेट ऑफ डेथ मतलब क्या, डेथ रेट मतलब मोर्टेलिटी. They will decrease the further damage and mortality. Now antiplatelet drugs are also used in the myocardial infection. तो एस्पिरिन है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, देखो इंपॉर्टेंट है ये चीज. एंटीप्लेटलेट ड्रग्स दे आर यूज्ड फॉर द प्रोफिलैक्सिस, फॉर द प्रिवेंशन. सो एस्पिरिन 300 mg इमीडिएटली, अगर हार्ट अटैक अभी आता है किसी को, आपके पास हॉस्पिटल में जाने के लिए टाइम है, इमीडिएटली उसको एस्पिरिन का टैबलेट उसको क्रैश करके देना है. So you can save the life of patient. If you find any patient who is collapsing due to myocardial infection, so immediately take an aspirin tablet, break it, crush it, and give him. So aspirin 300 mg reduces the mortality and improves the effect of thrombolysis. And for the prophylaxis, for the prevention after myocardial infection, reoccurrence ना हो, इसलिए for the prophylaxis aspirin again 75 to 150 mg per day, 75 to 150 mg per day. ये डोज इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका. कोई बुक्स में 50 to 150 है. 75 to 150 mg per day. Clopidogrel is also here, है ना. तो ये aspirin नहीं दे सकते, patient is allergic to the aspirin, then use clopidogrel. So antiplatelet. Remember analgesic drug, then thrombolytic drugs, antiplatelet drugs, they are used in the myocardial infection. Another is nothing but the oxygen support. Oxygen with the high flow, hyperbaric oxygen इसको बोलते हैं, hyperbaric oxygen. Hyperbaric means oxygen with the high pressure, oxygen high flow should be given by inhalation to the patient, and other supportive treatment, like nursing care, saline वगैरह देना है, दूध भी. Now again beta blockers can be used. Beta blockers, for example atenolol, cardioselective beta blocker, intravenously 5 to 10 mg over a 5 minute can reduce the short-term mortality in the myocardial infection and also decreases the incidence of arrhythmia. ठीक है ना, तो बीटा ब्लॉकर भी यूज करते हैं. तो याद रखना है एनाल्जेसिक ड्रग, थ्रोम्बोलाइटिक्स, एंटीप्लेटलेट, है ना, ऑक्सीजन, बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है, एंड सपोर्टिंग ट्रीटमेंट जैसे एंटी इमेटिक ड्रग बाय इंटरवेनस, सुटेबल एंटी अरिथमिक ड्रग फॉर द अरिथमिया, है ना, is a common in a patient with acute myocardial infection. Arrhythmia is a common in a acute myocardial infection. That's why antiarrhythmic drug. तो क्वेश्चन ऑलरेडी इसके ऊपर कैसा आ चुका है. वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ ड्रग इज नॉट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन. तो उसमें ऑप्शन आएगा एनाल्जेसिक, थ्रोम्बोलाइटिक, एंटीप्लेटलेट. तो कौन से ड्रग यूज करना है? एनाल्जेसिक यूज करते हैं, थ्रोम्बोलाइटिक यूज करते हैं, एंटीप्लेटलेट यूज करते हैं, ऑक्सीजन, बीटा ब्लॉकर, एंटीआरिथमिक ड्रग भी यूज करते हैं, है ना. तो बच्चों को लगता है कि हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन में एंटीआरिथमिक ड्रग क्यों यूज करते हैं? नहीं करते, बट करते हैं बिकॉज पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन arrhythmia is the common, so that's why antiarrhythmic drug is also used. Remember, right? So you can see here what are the sequence of events that occurs in the myocardial infection. Myocardial infection में क्या होता है? जैसे because of the coronary block, because of the coronary artery block or arteriosclerosis of coronary artery. Coronary artery में जब arteriosclerosis होता है, there is a decreased blood flow to the myocardium. So myocardial ischemia, ना, then that develop a cardiac pain. उसकी वजह से क्या होगा? हार्ट में पेन होगा, that is known as heart attack है. तो cardiac pain. Now पेन जब होगा तो आप घबरा जाओगे. Okay? Due to pain and ischemia, you will get anxiety and apprehension. टेंशन आएगा, apprehension आएगा. तो anxiety, apprehension stimulate your brain will release the noradrenaline. तो sympathetic stimulation. Now sympathetic stimulation मतलब क्या? Noradrenaline will increase the cardiac workload. कैसे? Noradrenaline will increase the heart rate and force of contraction. So cardiac workload is increased and
कार्डियक एफिशिएंसी, मतलब जो हार्ट का एफिशिएंसी वो कम होगा, डिक्रीजेस द कार्डियक एफिशिएंसी, and they again contribute to increase or worse the myocardial ischemia, so worsens the symptoms of myocardial ischemia, and finally myocardial cell will die, cell death, known as a myocardial infraction, right? Now, so for cardiac pain you can use analgesics like morphine, pethidine. For anxiety apprehension you can use diazepam, आप diazepam यूज कर सकते हो. सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के लिए बीटा ब्लॉकर्स यूज कर सकते हो, एंड फॉर कार्डियक वर्कलोड डिक्रीज करने के लिए, कार्डियक एफिशिएंसी डिक्रीज करने के लिए वैसोडाइलेटर्स यूज कर सकते हो, एंड जो मायोकार्डियल ज़्यादा अगर हो गया तो फाइब्रोलाइटिक ड्रग यूज करो, जैसे है ना स्ट्रेप्टोकाइनेस, यूरोकाइनेस हो रहे हैं, वैसोडाइलेटर्स एंड ऑक्सीजन. तो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन. तो दिस विल एंड द चैप्टर नोन एज आपका जो चैप्टर हो चुका है कौन सा, drug used in the angina and myocardial infraction. Now one topic is remaining known as a drug treatment of congestive cardiac failure. So in the evening we'll see drug treatment of congestive cardiac failure. तो अभी अपन ने क्या देखा है ना, we have seen the है ना, yesterday we have already seen the classification and nitrates. तो लास्ट लेक्चर में ही अपने नाइट्रेट्स वगैरह देखा था, pharmacology of organic nitrates. Then today we have seen the beta blockers. We have seen the calcium channel blockers. We have also seen the potassium channel activator and remaining drugs, right? ये ड्रग आज आपने देखे क्या क्या होता है, कैसे होता है. मायोकार्डियल इन्फेक्शन we have seen. So remaining part we'll see tomorrow. कल अपन देखें, सॉरी, रिमेनिंग पार्ट विल सी इन द इवनिंग में अपन देखेंगे ये वाला पार्ट. कौन सा है? इन द इवनिंग विल सी द congestive heart failure. In the evening we'll see congestive heart failure, and this section will be completed, है ना. congestive heart failure खत्म हो गया तो आपको पूरा ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर खत्म हो जाएगा. उसका मेडिसिनल केमिस्ट्री अपन बाद में लेगी. मंडे विल नॉट बी अ लेक्चर, सो टुडे इवनिंग ओनली आई विल कंडक्ट वन लेक्चर, ठीक है. तो एवरीबडी विल ज्वाइन एट 4 PM, 4 बजे और एक लेक्चर होगा आपका ड्रग यूज इन द कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, ठीक है. ये प्रिपेयर करके आपको वहाँ पे लिंक वगैरह भेज दूँगा, राइट. एंड मैं इसके ऊपर टेस्ट भी डाल दूँगा, है ना. विल ऑल्सो कीप ऑन, है ना. पहले तो एक टेस्ट डालूंगा जो मेरे पास ऑलरेडी है, दूसरा टेस्ट, सेकंड टेस्ट में क्वेश्चन आया बना के डालूंगा. तो इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन के आंसर देना, टेस्ट अटेम्प्ट करना. जीपैट नज़दीक आने वाला है आपका, तो लेक्चर्स रिपीटेड देख लो, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको. सी यू इन द इवनिंग.